Hello everyone, I'm back with our daily current affairs session for today. And without any delay, let's just begin and see what are the important news that we have for today. So, the first news article that we have for today is related to the Juvenile Justice Act. So, this is basically that the Supreme Court has given some guidelines for the delicate task of deciding whether juveniles aged between 16 and 18 accused of heinous offenses such as murder can be tried like adults as per the Juvenile Justice Act 2005. So सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं ये डिसाइड करने के लिए कि जो जुवेनाइल्स हैं जिनकी एज 16 से 18 के बीच में है वो अगर किसी हेनियस क्राइम ऑफेंस में इफ दे आर इंडल्ज जैसे मर्डर हो गया तो क्या उनको अडल्ट्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2005। सो इसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इससे रिलेटेड काफी अदर एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। एंड इस आर्टिकल से रिलेटेड जो असेसमेंट इनिशियल असेसमेंट की बात की गई है, मेंटल कैपेसिटीज की बात की गई है, तो ये सारी चीजों को हम इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में देखेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। So this act, JJ Act in short, 2015 replaced the Indian Juvenile Delinquency Law, Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2000. So ये जो Juvenile Justice Act of 2015 है इसने किसको replace किया? ये 2000 का जो law. It allows for juveniles in conflict with law in the age group of 16 to 18 involved in heinous offenses to be tried as adult. So ये क्या इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी चिल्ड्रन हैं जो कि एज 16 से 18 के बीच में है जो कि किसी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनको अडल्ट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके The act also sought to create a universally accessible adoption law for India और इसने एक यूनिवर्सल एक्सेसिबल अडॉप्शन लॉ की भी बात की फॉर इंडिया। The act came into force from 15 January 2016. So this is also important. Dates बड़ी important हो जाती हैं कुछ एग्जाम्स में। So ये कब से एनफोर्स में आया? 2016 में January 15. Okay? So this is about this Juvenile Justice Act. अब इसके जो की फीचर्स हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। Change in nomenclature from juvenile to child or child in conflict with law across the act to remove the negative connotation associated with the word juvenile. So in order to remove this negative aspect कि वो जो negative connotation है वो remove हो जाए in order to have to not have that negative impact with the word related to juvenile. Okay, inclusion of several new definitions such as orphaned, abandoned and surrendered children and petty serious and heinous offenses committed by children. Then setting up juvenile justice board and child welfare committees in every district. Both must have at least one woman member each. So और इसका क्या important की features है कि juvenile justice board होने चाहिए, child welfare committees होनी चाहिए हर district में और जिनमें कि कम से कम एक woman member होनी चाहिए because then there can be juveniles जो गर्ल्स हो सकती है तो इस फॉर देयर सेफ्टी मैटर वहां पे एक वुमेन होना इज इम्पोर्टेंट।
specific provisions for heinous offences committed by children above the age of 16 years. This was in response to the juvenile convict in Nirbhaya case. So we already know जो निर्भया केस था उसमें एक जुवेनाइल भी इन्वॉल्व था. So उसके बाद से इसमें हुआ कि जो स्पेशल प्रोविजंस हैं कि अगर कोई भी माइनर किसी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, किसी हीनियस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो फिर उसको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए. ओके, द नेक्स्ट इज inclusion of new offenses committed against children. So अगर बच्चों के अगेंस्ट भी कुछ ऑफेंसेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड है, जैसे सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एनी पर्पस for any purpose including illegal adoption, corporal punishment in child care institution, use of child by migrant group, offenses against disabled children and kidnapping of abduction of children. So ऐसे जो क्राइम्स हैं जो बच्चों के अगेंस्ट होते हैं उसका भी इसमें इंक्लूजन किया गया. पेनल्टी फॉर क्रूएलिटी अगेंस्ट अ चाइल्ड, और जो किसी बच्चे के अगेंस्ट कोई क्रूएलिटी का अगर एक्ट है तो उसके अगेंस्ट भी पेनल्टी लगाई जाएगी. ऑफरिंग अ नार्कोटिक सब्सटेंस टू अ चाइल्ड and abduction of selling a child has been prescribed. Okay, so in cases mein there will be penalty also. I hope till here it is clear. Now we will try to understand that what is the recent Supreme Court assessment. कि ये अभी न्यूज में है, तो what is exactly the assessment of the Supreme Court? The dedicate the task of deciding whether juveniles aged between 16 and 18 accused of heinous offenses such as murder can be tried like adults should be based on meticulous psychological investigation. Now, what they are saying, Supreme Court is trying to say, they are saying कि जो भी assessment होगा, जो भी मतलब ऑफेंस किया है जिस भी बच्चे ने जो 16 या 18 के बीच में है, 16 से 18 के बीच में, तो ये जो ट्रायल होगा वो टोटली बेस्ड होना चाहिए साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे, बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही ध्यान पूर्वक उसको कि उसको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए या नहीं, ये बेस्ड किस बात पे होगा, साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे. ठीक है. They should not left to the discretion and perfunctory wisdom of juvenile justice boards and children's courts across the country. The court held. So ये जो डिसीजन है, ये ऐसा नहीं है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या जो बच्चों की कोर्ट्स हैं वो उनकी विजडम के ऊपर कि अगर वो चाहे तो अडल्ट की तरह ट्रीट कर ले, वो चाहे तो नहीं कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रॉपर असेसमेंट होगा जो साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होगा, ये उनकी डिस्क्रिशन पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. नाउ दिस इज एक्चुअली व्हाट द सुप्रीम कोर्ट्स असेसमेंट सेज. नाउ व्हाट डेडिकेट टास्क डज द एपेक्स कोर्ट इज रेफरिंग टू. What is this dedicate task? ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. नंबर 1, सबसे पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा. Section 15 of the Juvenile Justice Act requires a preliminary assessment to be done of the mental and physical capacities of juvenile aged between 16 and 18 who are involved in serious crimes. So Section 15 of JJ Act will require to have a preliminary assessment. एक preliminary assessment होगा जिसमें कि वो जो जुवेनाइल है उसकी मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज को मेजर किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा. The assessment is meant to gauge a child's ability to understand the consequences of the offense and the circumstances in which he or she allegedly committed the
और इसमें क्या होगा, इस असेसमेंट को एक्चुअली क्यों किया जा रहा है, इट इज एक्चुअली मेंट टू मेजर और गेज कि चाइल्ड की जो एबिलिटीज हैं वो कितना समझ रहा है कि ये जो क्राइम उसने किया है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस सर्कमस्टांसेस में उस बच्चे ने ये क्राइम किया है, ये सब समझने के लिए ये असेसमेंट किया जाए. If the juvenile board justice board is of the opinion that the juvenile should not be treated as an adult, it would not pass on the case to the child's court and hear the case itself. अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस ओपिनियन को रखते हैं दैट ये जो बच्चा है इसको अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, देन ये जो कोर्ट केस है ये आगे पास नहीं किया जाएगा एंड जो चिल्ड्रंस कोर्ट है उसी में इसकी सुनवाई हो. If the board decides to refer the case to the children's court for trial as an adult, the juvenile, if guilty, would even face life imprisonment. और अगर चाइल्ड कोर्ट में ट्रायल के लिए जाता है एज एन अडल्ट तो फिर हो सकता है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे दिया जाए. ओके, नाउ देयर इज अनदर पार्ट ऑफ दिस डेडिकेटेड task which is mental capacity. So these both are just we have taken from here. Okay? So first is initial assessment, then is mental capacity. Okay? Now let's see the second. The evaluation of mental capacity and ability to understand the consequences of the child in the conflict with the law should not be दोनों आ गए. Law should not be relegated as a routine task. The process of taking a decision on which the fate of the child in conflict with law precariously rests should not be taken without conducting a meticulous psychological evaluation. So जो भी process है, जो भी decision है, वो सब कैसे लिया जाएगा, बहुत ही सतर्क psychological evaluation करके. The court said the board which conducts the assessment of the child should have at least one child psychologist. तो ये जो बोर्ड होगा जो ये असेसमेंट को कंडक्ट करेगा वो बोर्ड में कम से कम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होना ही चाहिए. ओके, नाउ व्हाट इज द वेफॉर्म? द कोर्ट डिस्कवर्ड that there were neither guidelines nor a specific framework in the place for conducting of preliminary assessment. तो कोर्ट ने ये पाया कि कुछ ऐसा कोई गाइडलाइंस ही नहीं है प्रॉपर, ना ही कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क है जिससे कि जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो किया जा सके. The court left it open for the center and the National Commission for Protection of Child Rights to consider issuing guidelines or directions in this regard. तो कोर्ट ने ये किस पे छोड़ दिया, सेंटर पे छोड़ दिया और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पे छोड़ दिया कि वो ये गाइडलाइंस पे और क्या डायरेक्शन है इस रिगार्ड में दे विल गो. It should further take the assistance of experienced psychologists and psychosocial workers. And ये भी है कि आगे असेसमेंट के लिए कोई भी साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोसोशल वर्कर की हेल्प लेनी चाहिए. Okay, so with this we have come to an end to this particular news. Now let's quickly move further for the next news of today. Next is related to that India's imports from China reached a record $57.51 billion in the first half of the year, according to the China's trade figure. Okay, so let's try to understand what are the reasons
what are the other aspects, what are the import export things between India and China, all those things. Okay, so first we have that is India China bilateral trade. So India is China is, wait, give me a second, let me just use eraser. Yeah, so China is India's largest trading partner. Okay, now what are the major commodities imported from China into India? क्या क्या है मेजर चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से इन आवर कंट्री? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मशीन्स, engines, pumps, organic chemicals, fertilizers, iron and steel, plastics, iron or steel products, gems, precious metals, coins, ships, boats, medical and technical equipments. तो इतनी सारी चीजें हैं जो हम चाइना से import करते हैं. Now what China actually is importing from us? So इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना को, वो देखते हैं. Cotton, gems, precious metals, coins, copper, ores, slag, ash, organic chemicals, salt, sulfur, stone, cement, machines, engines and pumps. Okay, तो ये सारी चीज है, बट कितने क्या रेशियो है इसका वो बड़ा ही अलग है, क्योंकि हम जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. ओके, नाउ रीसेंट मेजर्स टू कर्ब इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, ताकि जो चाइना से हमारा इंपोर्ट है उसको कर्ब किया जाए, कम किया जाए. Blame it on the pandemic and the border dispute, but the result is the same. Some Indian businesses are boycotting China. We already know. The government is now asking Indian e-commerce companies like Flipkart and Amazon. I'm sorry, just give me a minute. Yeah. Yeah. The government is now asking Indian e-commerce companies like Flipkart and Amazon India to label country of origin for all the products sold on its website. So government of India ने already ensure करने को बोला है कि जो भी सामान जो e-commerce companies बेचेंगी उस हर सामान पे उनका जो country of origin है वो वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए. The government banned many Chinese mobile applications, including top social media platforms such as TikTok, Hello, WeChat, games such as PUBG. तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया ने ये सारे चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को टोटली बैन कर दिया है. Okay. So can we completely boycott Chinese products? Now this is a question. What do you think? Let's try to read. Trade deficits are not necessarily bad. So both Indian consumers and Chinese producers are gainer through trading. So हम लोग consume कर रहे हैं, हमको सामान मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो it's beneficial for us. और जो Chinese producers हैं उनके लिए भी एक gain है कि उनकी trading हो रही है. It will hurt the Indian poor the most. This is because the poor are more price sensitive, because जो Chinese product है वो बड़े सस्ते में मिल जाते हैं और एक गरीब इंसान के लिए बहुत difficult होता है कि वो किसी महंगी चीज को अफोर्ड कर सके. तो अगर उसको सस्ते में कोई चीज मिल रही है तो it is very much good for them. Will punish Indian producers and exporters. Several businesses in India import intermediate goods and raw materials, which in turn are used to create final goods both for the domestic Indian market as well as global market. So जो इंडिया के producers हैं and exporters हैं उनके लिए भी ये नुकसानदायक हो सकता है, because they will then will not be able to do their work, क्योंकि
वो कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फिर उससे वो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड देन दे सेल इट इन द इंडियन मार्केट आल्सो एंड इन द ग्लोबल मार्केट आल्सो, सो उनके लिए भी नुकसानदायक है। Pharma sector could be worst hit. For instance, of the nearly $3.6 billion worth of ingredients that Indian drug makers import to manufacture several essential medicine, China catered to around 68%. So 68% जो भी medical essentials हैं, वो actually we have this because of, China. Will barely hurt China. So according to United Nations Conference on Trade, the development data for 2018, 15.3% of India's import are from China, and 5.1% of India's export go to China. So India का जो import है वो तो 15.3% है China से, and जो export है China को वो 5.1% है. तो China को मुश्किल ही कोई फर्क पड़ेगा, but India को फर्क पड़ेगा. Now what is the Waveform? So in the long term, under the banner of self-reliance, India must develop its domestic capabilities and acquire a high share of global trade by raising its competitiveness. So, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है उसके अंदर we have to, actually be आत्मनिर्भर. सिर्फ कहने से नहीं होगा, but we actually have to be आत्मनिर्भर. The government's Atmanirbhar focus is expected to help ministries handhold industries where self-reliance need to be built. Okay. For the long run, a more effective strategy needs to be built to provide an ecosystem that addresses the cost disability of Indian manufacturing leading to such import. Okay. So this is actually the way forward. Now we have come to an end to this particular news. Now the next news that we have is about India ranks 135 among a total of 146 countries in the Global Gender Gap Index 2022, which is released by the World Economic Forum. So यहाँ पे आपको बड़े ही सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए इस पर्टिकुलर में, कि एक तो इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है. Now let's try to understand this particular news. What is Global Gender Gap Index? The report is annually published by the World Economic Forum, in short WEF. It benchmarks gender parity across 4 key dimensions or sub-indices: economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. तो जेंडर पैरिटी की ये बात करता है, और उसको मेजर करने के लिए इसके 4 डायमेंशंस हैं, जिसमें कि नंबर 1 है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अटेनमेंट कितना है, हेल्थ एंड सर्वाइवल कैसा है, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. ठीक है. सो ये जो है ये मेजर्स हैं. 4 डायमेंशंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये पता होने चाहिए. व्हाट आर द 4 मेजर्स ऑफ gender parity, of measuring gender parity in global gender gap index. ठीक है. चलो आगे बढ़ते. It measures scores on a 0 to 100 scale, which can be interpreted as the distance covered towards parity of the percentage of the gender gap that has been closed. ठीक है. So इसमें एक स्केल होता है, 0 to 100 का स्केल होता है. आगे हम देखेंगे कि इंडिया की इसमें क्या मार्किंग है, क्या रैंकिंग तो वी हैव ऑलरेडी सीन. The report aims to serve as a compass to track progress on
relative gaps between women and men on health, education, economy and politics. So ये जो report है इसका actually aim क्या है कि ये एक progress को measure करता है कि क्या actually जो women and men के बीच जो gaps हैं political dimension में, economy में, education में, health में, उसको ये measure करता है कितना difference है basically दोनों की progress में. According to the World Economic Forum, it is the longest standing index which tracks progress towards closing these gaps over time since its inception in 2006. Very important line. एक तो longest standing index है Global Gender Gap Index जो कि प्रोग्रेस ट्रैक करता है, ठीक है, और ये इसका इंसेप्शन हुआ था 2006 में. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो इस लाइन में 2-3 इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ हाउ हैज इंडिया फेड ऑन डिफरेंट सब इंडेक्सेस. इंडिया का क्या रहा इसमें पूरा, वो देखते हैं. Here's how it stands on different sub indices. Political empowerment. This includes metrics such as the percentage of women in parliament, the percentage of women in ministerial position, etc. So, कितने परसेंट वुमेन है पार्लियामेंट में, कितने परसेंट वुमेन है अचीव मिनिस्टेरियल पोजीशंस पे. Of all the sub indices, this is where India ranks the highest, 48 out of 146. So ये वाले पैरामीटर में इंडिया की जो रैंकिंग है वो सबसे हाईएस्ट है, which is 48 out of 146. However, notwithstanding its rank, its score is quite low at 0.267. So बहुत ही कम है score. Some of the best ranking countries in this category score much better. For instance, Iceland is ranked 1 with a score of 0.874 and Bangladesh is ranked 9 with a score of 0.546. So Bangladesh की ranking हमसे better है. Moreover, India's score on this metric has worsened since last year from 0.276 to 0.267. So इस बार जो है वो 2.267 स्कोर हुआ है. पहली बार, पिछली बार जो था वो 0.276. The silver lining is that despite the reduction, India's score is above the global average in this category. Okay, so still India का जो score है is above the global average in this particular category of political empowerment. Now, what is economic participation and opportunity for India's, India का क्या state? This includes metrics such as the percentage of women who are part of the labor force, wage equity for similar work, earned income, etc. So, क्या जो women है उनका क्या percentage है in the labor force, उनको क्या similar work के लिए equal pay मिलता है या नहीं, उनकी जो earn income है, इस सब के बारे में है, basically economic participation के बारे में. Here too, India ranks a lowly 143 out of 146 countries. In contention, even though its score has improved over 2021 from 0.326 to 0.350. So score जो है वो improve हुआ है, but still the rank is very low, 143. Last year, India was pegged at 151 out of 156 countries, right? So last year, इतना important नहीं है data. India's score is much lower than the global average, and only Iran, Pakistan, and Afghanistan are behind India on this metric. So, इंडिया का जो स्कोर है वो काफी कम है ग्लोबल एवरेज के, और सिर्फ ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही है इंडिया के पीछे. So, इसमें जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है उसमें बहुत ही बुरी कंडीशन है इंडिया in this index. Educational attainment. This sub-index includes metrics such as
literacy rate and the enrollment rate in primary, secondary and tertiary education. तो इसमें क्या है कि लिटरेसी रेट को मेजर करते हैं और वुमेन जो है, जो गर्ल्स हैं, उनका कितना एनरोलमेंट है, वेदर इट इज अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एजुकेशन सेक्टर, तो उनका जो एनरोलमेंट है उसको उसके बेसिस पे इट इज मेजर. Here, India ranks 107th out of 146 countries, and its score has marginally worsened since last year. So, पहले से खराबी हो गया इसको. In 2021, India was ranked 114 out of 156 countries. तो पहले countries ज्यादा थी. ठीक है? So this is about educational attainment. Now the last is health and survival. This includes two metrics: the sex ratio at birth and healthy life expectancy. Okay, so ये important है. क्या क्या इसके metrics है? In this metric, India is ranked last 146 among all the countries. So last in this, India is last. Can you imagine? Last. Its score hasn't changed from 2021 when it was ranked 115th out of 146 countries. So last year 155 था out of 156, इस बार 146 ही है. Last time इस बार. तो पिछली बार second last one. The country is the worst performer in the world in the health and survival sub-index, in which it is ranked 146. Okay, so the country is the worst performer in the world. Health or survival के जो dimension है उस. Okay, now where does India stand among its neighbors? जो हमारी neighboring countries हैं, उनके respect में India कहाँ stand? India ranks poorly among its neighbors and is behind Bangladesh, which is on 71, Nepal, which is on 96, Sri Lanka, which is on 110, Maldives, which is on 117, and Bhutan, which is on 126. So India के जो performance है वो काफी below है from the comparison of these countries. Only the performance of Iran, Pakistan, and Afghanistan was worse than India in South Asia. सिर्फ ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया से नीचे है. In 2021, India ranked 140 out of 156. ठीक है? And इस बार का आपने देख ही लिया कि इंडिया की रैंकिंग 135. So कौन सी countries नीचे है? So this also become very important. This one, yeah, this part becomes important. कौन सी countries है जो नीचे है? Wait. Yeah, so these countries which are below the position and वो neighboring country जो position India की position से ऊपर है. Okay. So with this, we have come to an end to our daily analysis for today. I'll meet you soon tomorrow with our daily current affairs session. Thank you so much and have a very nice day. Keep studying and work. Thank you.